Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We'll start with technical and derivative outlook. So there was a positive trade on Monday's session. We saw there was buying. The index was up by 117 points, and Nifty closed at 17,711. So on Monday, what we observed was Nifty has made a high at 17,800. This was the level which we were talking. So over the last couple of days, we maintained that we uh, we should be witnessing a bounce back trade. And Monday, we also saw it high at 17,800. So now the bias with this is turned positive. We believe the 17,800 will be retested once. Today, looking at the SGX and the global market, there is slightly weakness, but then that I believe that should be a buying opportunity for our Indian indices. And any decline today should be a buying opportunity. Lowest level, Nifty has support at 17,500. So whenever it comes close to this level, again, there will be buying will be seen. So the major trend reversal or directional change will be seen when there's 200-day moving average will be broken, which is below 17,400 as of now. So the bias will be positive. Decline should be used as a buying opportunity is what we feel for the next couple of days. 17,800 to 18,000 on the higher side looks we should be retesting those levels. Same with the Bank Nifty. Bank Nifty was up by was marginally up by 99%. 99 points, which was at 41,350 levels. So Bank Nifty was not that strong as compared to the Nifty, which we saw on the last Monday. But even though Bank Nifty was one of the outperformer in the last couple of sessions, so there is slight amount of breathness can be seen. And Bank Nifty, we believe that 42,000 is the level where it might find resistance because that was the level which has been acting as a resistance since start of the February. So 42,000 is a resistance as and when 42,000 levels are taken out in the Bank Nifty will see fresh upside on the higher side. On the lower side, 40,800, 40,500 is the immediate base for the Bank Nifty. Today, any correction close to this levels can find supports in Bank Nifty. So even lower levels, buying should be done in the Bank Nifty. HDFC Limited is looking good on charts. SBI is looking good on charts. Bank of Baroda is looking good on charts. So I think declines in this counter should be viewed as a buying opportunity. Coming to derivatives data, there was a short covering in Nifty futures to the tune of 6.77%, which is a decline of 0.87 million shares. The put call ratio reduced slightly from 1.17 to 1.12, but it is trading above one ratio. That is positive. The major additions were seen in the 17,800 call option. So that will be a resistance, then 18,000 call option. So that will be highest second resistance level. On the put front, 17,500 and 17,400. So that would be the support from the put point of view. Coming to Bank Nifty has added a fresh short. They added a short covering. They saw the short covering in Monday session to the tune of 1.55%, which was an reduction of 0.08 million shares. The put call ratio has declined from 1.28 to 1. So even this is slightly a concern. If it slips below 1, then the momentum from the derivatives point of view will slightly turn negative. The major call additions were seen in 41,500. So that will be the resistance, and 41,000 put option. So that will be the support. So net today gap down market should be viewed as a buying opportunity is what I believe. Lastly, the FI data. FIs on the Monday has added long position in index future close to 16,500 contact. Net long short ratio has now from 23 it has gone to 26%, which is positive. Stocks which have seen a long build-up are ONGC, Titan, and NTPC, and short build-ups were seen in metal space. So Tata Steel and Hindalco may see some selling pressure, followed by Cipla in the pharma. Stocks which we are liking for the day are JSW Energy, NLC India, GNFC, and HDFC Bank. These are the counters which are trading positive. There was volume seen in this counter. So I think declines in these stocks can be viewed as a buying opportunity. So that's all from me. And hand out to Bhavesh sir for more research updates. Thank you. Hi, good morning, team. So, starting with first update on TCS. So, TCS is expected to win US dollar 1 billion deals worth of deals from Marks and Spencers, and this is very positive. And it could add 0.4% for to the top line. Secondly, on Z, so Z has settled
disputes with operational creditor who had filed for insolvency petition against Z. The petition has now been withdrawn as he has already paid 211 crores, which was due. So this is positive for Z. Secondly, PVR has opened an 11 screen multiplex in Chennai. So with this, they have achieved their target of adding 100 screens in FY23. So overall, positive for both PVR and Inox both. Then on Ashoka Buildcon, so Ashoka Buildcon announced that it has been debarred from bidding for a period of 45 days. This is negative for the company. However, they already have a very good set of orders, and uh, for FY23, they've already won relatively good number of orders compared to KNR and even GR Infra. But this news is a little bit negative. And lastly, on Hindustan or Aeronautics, the government, the Union Cabinet has approved a purchase of one aircraft, which is worth 6,800 crores from Hindustan Aeronautics. So this is positive for the company, although we don't have the official coverage on the stock. That's it for me. Over to you, the retail team. Yeah, thank you, sir. Good morning, everyone. We'll see more further updates. In yesterday's session, if you see the Federal Reserve have intended they are going to raise they're going to expect a raise hike. And we could see the US stocks plummeting at 1.72%. This is also coming from the incoming information saying that tougher measures would be needed to control the inflation. And inflation is very sticky over there and it's not cooling off. And the data also are expected, giving and expected that the rate hike could be a big one. So on that reason, if you see global markets yesterday plummeting. Secondly, we see that Dr. Reddy's recalled over 4,000 bottles of US drug due to packaging error. And this was in the New Jersey-based plant of the Dr. Reddy, which they had allotted due to the presence of tartromyces 1 mg capsule commingled in the bottle containing and labeled as 0.5 mg capsule. The affected lots was produced in the Bachivali waste and marketed in the US American arm. And this was called on February 8 this year. LTI Mindtree also announced an inauguration of the new delivery center in Kharkov, Poland as a part of its strategy to expand the presence in Eastern Europe. And Calvo Logistics has also approved to plan to acquire 39% stake from its partner for rupees 373 crore. With this acquisition, Alcolgo will take its 100% stake in the contract logistics business. Hero MotoCorp, the two-wheeler maker, has reached an agreement with California-based Zero Motorcycles, and they are going to develop a premium electric motorcycle in this segment. Adani Group on Tuesday has repaid share-based financing of 7,374 crores over $900 million and repay remaining loans by the end of this month. This is all the concerns over the leverage and debt to win over the investors' confidence. Power Grid Board has also approved investments of nearly 4,071 crores for transmission of projects in the country. The board has also approved a transmission system for Kurnool Wind Energy Zone, Solar Energy Zone Part A and Part B at an estimated cost of 3,547 crores and scheduled to be commissioned by the November 24th. NDBC, the company saw a 12% growth in the electricity generation for 364.2 billion units in April 22 and February 23. Compared to its generation of 9.56% the power ministry said the capital coal production in the February stood at 2.6 MTC and the dispatch during the month was 2.5 MT. This makes a robust growth for 80%, 87% respectively. NVCC has also received an work order for the 3 projects cumulatively valued at 541 crore. It has also received a letter of award of construction of residential and accommodation at the Institute of Labor and Energy Sciences in the New Delhi for a contract value of 90 crores. Indraprastha Gas, the company has signed an agreement with Genesis Gas Solution and they have entered a JV to agreement to set up a integrated metering system for a smart meter manufacturing at a facility of 110 crores. And Wipro has also announced the opening of its America headquarters in East Brunswick in New Jersey. For the PVR, the company has opened a 11th screen multiplex in Phoenix Market City, Chennai. RBL Bank has also elevated Deepak Ruya to the position of the Deputy Chief Financial Officer with effect from March 6. He will be responsible for all the functions executed by CFO till the new appointment at later office. NMDC has also appointed Mr. Vishwanath Shure as Executive Director, Steel Authority of India as a Director of Commerce. Ajanta Pharma will also consider proposal for the buyback of the equity shares of the company on March 10th.
And lastly, the Z has also entered into a settlement agreement with the operational creditor Indian Performing Rights Society to settle all claims and disputes. Subsequently, IPR has also withdrawn its insolvency petition filed with the company. So that's it from mine. I'll hand over to Kshitija for Hindi update. Thank you. थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग ये कॉल को हिंदी में कर लेते हैं। तो फर्स्ट अपडेट तो है वो जी के ऊपर है। और जी ने मंडे बोला है कि उनका जो सेटल था डिस्प्यूट था ऑपरेशनल क्रेडिटर के साथ, जो इंसॉल्वेंसी पिटीशन अगेंस्ट जी था वो देन पिटीशन अभी विड्रॉ हो चुका है। और ये जो डिस्प्यूट इन्वॉल्व हुआ है उसकी जो ड्यू अमाउंट है वो 211 करोड़ है। दो जी के लिए मेंशन है कि ये अमाउंट पेड और सेटल डिस्प्यूट के इन्फॉर्म किया है कि वो नो पेमेंट ऑफ पेनल्टी होगी और ये अच्छा होगा जी एंटरटेनमेंट के लिए। और मर्जर प्रोसीड होगा उसके बाद पेमेंट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होगा उनके लिक्विडिटी पे। और उनके पास कैश बैलेंस है वो 672 करोड़ का है। इसके साथ अदर इनके इंसॉल्वेंसी पिटिशंस है जो फाइल किए फाइनेंशियल लेंडर्स ने एनसीएलटी के यहाँ, वो उसकी जो केस की सुनावनी है वो 29 मार्च को है। देन नेक्स्ट अपडेट है एज पर मीडिया अनुसार टीसीएस से वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनकी जो $1 बिलियन डील है मार्क्स एंड स्पेंसर से वो विन होंगे और उस वहाँ पे मेनी एंगेजमेंट्स होंगी जो अपकमिंग रिन्यूअल फॉर मार्क्स एंड स्पेंसर्स के लिए होंगे। और टीसीएस एक्सपेक्टेड है कि इससे बेनिफिट होगा और कंपनी का बिलीफ है कि ये डील उनके टॉप लाइन में 0.4% ऐड करेगी। और टीसीएस ने और इसके अलावा मल्टीपल डील्स वॉन किए जो कि बेनिफिशियरी होगा वेंडर्स कंसोलिडेशन डील से और ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। पीवीआर जो कंपनी है उन्होंने नए 11 स्क्रीन मल्टीप्लेक्सेस चेन्नई में ओपन किए हैं। ये 11 स्क्रीन से वो प्रीवियसली अक्वायर्ड किए थे यूक सिनेमाज में। अभी ये ओपनिंग के साथ पीवीआर उनका जो टारगेट था 100 एड्स करने का ये साल में वो हो गया है और अभी 101 स्क्रीन ये है फिस्कल में। और कंबाइन एंटिटी है पीवीआर आइनॉक्स की जो अभी तक ओपन हुई है फाइनेंशियल ईयर 23 में वो 159 स्क्रीन है। तो ये कंपनी के लिए अच्छा है। करंटली स्टॉक के ऊपर बाय रेटिंग है और जो टारगेट प्राइस है वो 210 है। और इसके अलावा 2 में मक्का ये जो स्क्रीन है उसके 44,000 एडवांस टिकट्स बुक हुए हैं अक्रॉस जो वेरियस मल्टीप्लेक्स चेन्स है उसके। और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि गुड ओपनिंग होगा और कंसिडर है कि ओनली 3 जो हिंदी मूवीज है वो डबल डिजिट स्टार्ट किए थे दिस ईयर में। तो ये अच्छा रहेगा पीवीआर और आईएनएक्स के लिए। नेक्स्ट अपडेट है अशोक बिल्कॉन जो कंपनी है उन्होंने येस्टरडे अनाउंस किया कि उनको रिसीव डिपार्टमेंट ऑर्डर है मोर 45 डेज का वो मिला है। ये नेगेटिव है कंपनी के लिए। इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है कि मेजर ऑर्डर इनफ्लो जो है वो बिड ओपनिंग ये मंथ में होगा। और इसके साथ कंपनी को ऑलरेडी रिसीव गुड सेट ऑफ ऑर्डर टिल डेट फाइनेंशियल ईयर 23 हम लोग कंपेयर करें तो क्रेनर कंस्ट्रक्शन और जीआर इंफ्रा से गुड सेट ऑफ ऑर्डर्स है। और न्यूज का इम्पैक्ट नेगेटिव रहेगा स्लाइटली सेंटिमेंटल। और करंटली स्टॉक के ऊपर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से बाय रेटिंग का टारगेट वो 106 है। देन अजेंडा फार्मा कंपनी है उनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है 10 मार्च को जो कंसिडर करेंगे बायबैक इक्विटी शेयर्स के लिए। देन नेक्स्ट अपडेट है एचएएल जो कंपनी है मतलब उन्होंने इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ एक साइन ऑफ अग्रीमेंट साइन किया है जो प्रोक्यूर करेगी 70 HTTD 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट। उसकी जो वैल्यू है वो 6,800 करोड़ है। और इसके अलावा एलएनटी है उन्होंने भी साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोक्यूरमेंट करेंगे 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स। देन नेक्स्ट अपडेट है पावर ग्रिड जो कंपनी है उनके बोर्ड ने इन्वेस्टमेंट अराउंड 4,071 करोड़ का किया है 2 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में ये कंट्री में। देन आईजीएल कंपनी है द कंपनी एंड जेनेसिस गैस सॉल्यूशन है उनके साथ एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट एंटर किया है जो सेटअप करेंगे इंडिया में फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। और उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा वो 110 करोड़ का है। देन एनबीसीसी इंडिया है कंपनी को एक वर्क ऑर्डर मिला है 3 प्रोजेक्ट्स का जो कम्युलेटिव वैल्यू है उसकी तीनों की 541.02 करोड़। ये उनको लेटर ऑफ अवार्ड कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल अकोमोडेशन का लेटर ऑफ अवार्ड मिला है इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलरी साइंस न्यू दिल्ली से। और कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है 90 करोड़ है।
देन एनटीपीसी के ऊपर अपडेट है, कंपनी ने 11.92% की ग्रोथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में देखी गई है, जो अराउंड 364.2 बिलियन है यूनिट्स बिटवीन अप्रैल 2022 से लेके फरवरी 2023 में। और कंपेयर करेंगे कंट्री का जनरेशन ये सेगमेंट में, तो उसकी ग्रोथ है 9.56%। तो पावर मिनिस्ट्री ने ये अपडेट दी है। और कैपेसिटी कोल प्रोडक्शन है फरवरी में वो 2.6 मिलियन है मेट्रिक टन, और डिस्पैच ड्यूरिंग दिस मंथ अभी स्टूड है 2.50 मेट्रिक मिलियन टन। और जो और उसका जो मेकिंग रोबस्ट ग्रोथ है वो 80% से अप है और 87% से अप है। द नेक्स्ट अपडेट है अदानी ग्रुप के ऊपर। अदानी ग्रुप ने ट्यूसडे बोला है कि उनका जो रीपेड शेयर बेस्ड फाइनेंसिंग था 7,374 करोड़ का, वो प्रीपे मतलब जो रिमेनिंग लोन्स है वो एंड ऑफ द मंथ करेंगे। और ये अलाई कंसर्न ओवर लिवरेज एंड डेब्ट विन ओवर इन्वेस्टर होगा। द नेक्स्ट अपडेट है हीरो मोटो है, कंपनी की लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी, कंट्री की जो लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी है, वो उन्होंने बोला है कि उनका जो अग्रीमेंट है कैलिफोर्निया बेस्ड जीरो मोटरसाइकिल के साथ वो रीच हुआ है, जो कंप्लीट हुआ है और रीच हुआ है। को डेवलपमेंट करेंगे प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स। देन अल्कार्गो लॉजिस्टिक कंपनी है, उनके बोर्ड ने अप्रूव किया है कि वो अक्वायर करेंगे 38.87% स्टेक उनके जो पार्टनर कंपनी है उसमें 373 करोड़ की जो वैल्यूएशन पे। और ये एक्विजिशन के बाद अल्कार्गो लॉजिस्टिक है वो उनका स्टेक रहेगा 100% कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक बिजनेस में। देन एल&टी माइंड्री जो कंपनी है उन्होंने अनाउंस किया है इनॉग्रेशन न्यू डिलीवरी सेंटर कैरोको पोलैंड में। और ये उनका पार्ट होगा स्ट्रेटेजी एक्सपांड के लिए। और ये बेसिकली स्ट्रेटेजी होगी कि उनका जो प्रेजेंस है ईस्टर्न यूरोप में वो एक्सपांड करने के लिए। डॉक्टर रेड्डी कंपनी है, उन्होंने इनिशिएट किया है कि मतलब उनके ऊपर एक अपडेट है कि डॉक्टर रेड्डी ने जो ओवरऑल 4,000 बॉटल्स है ड्यूरिंग यूएसएफडीए पैकिंग एरर के वजह से रिकॉल की गई है। हैदराबाद में जो ये कंपनी है उनके लिए 4,320 बॉटल्स सैक्रो मूस कैप्सूल जो कंपनी कैप्सूल जो है जो यूज होता है प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम रीजेनरेटिंग ट्रांसप्लांट ऑर्गन के लिए। तो बेसिकली ये अफेक्ट कंपनी पे प्रोड्यूस कंपनी, इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और मार्केट है यूएस में अमेरिकन आर्म में, तो उनका जो इनिशिएट है क्लास 2 का नेशन वाइड वो रिकॉल हुआ है फरवरी 8 को ये साल में। नेक्स्ट अपडेट है यूएस फेडरल रिजर्व के ऊपर। यूएस फेडरल रिजर्व है वो लाइकली रेज करेंगे इंटरेस्ट रेट, जो एक्सपेक्टेड है और रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग डेटा आ रहा है। और लास्ट स्टेप है टोटलिटी इनकम इंफॉर्मेशन सजेस्ट के लिए। तो लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा के जो डेटा आया है वो स्ट्रॉन्ग है और एक्सपेक्टेड है कि अल्टीमेटली लेवल है इंटरेस्ट रेट की वो लाइकली हायर होंगी प्रीवियस मतलब जो मतलब एक्सपेक्ट किया था उससे। इसके अलावा मार्केट के ऊपर अपडेट ये है कि क्रूड की जो प्राइस है वो 81 के नीचे जाएगी। तो जो क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स है उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उसमें रिलायंस है, एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स हम लोग को अच्छे लग रहे हैं। आज ग्लोबल सेंटिमेंट मतलब निगेटिव है, तो थोड़ा बहुत इंडियन मार्केट में भी करेक्शन देख सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी जो डिक्लाइन होगा उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और हम लोग अभी भी बाउंस बैक का व्यू रखते हैं। तो निफ्टी में 17,800 तक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है और बैंक निफ्टी में 42,000 का बाउंस बैक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। So that's it from our end. Thank you everyone for joining the morning con call. Have a nice day.